Hello students, good morning. I am Sriram Biswai, lecturer in mathematics of Nalanda Vidya Mandir, Plus 2 Science College, Barampur. Today we have to start example 4. Question is, prove by principle of mathematical induction that for all n belongs to n square plus n is even natural number. That means देखो हम एटी कौन गलती prove करें कौन कही ना n square plus n is even कहले natural number कहले. That means देखो जदि n गोटी मोर natural number होची तो n रा वैल्यू natural number कौन आसबो एठी ना एठी है natural number 1 2 3 4 5 6 up to infinite वाला. तो n रा वैल्यू कौन एठी ना हम वैल्यू पुट करले जहा आसीबो से सबले कौन छी इवन नंबर आसीबो बट से कौन थबो नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर इवन क्या आसीबो 2 4 6 8 10 12 अप टू इनफिनिट. तो ए टाइप रा कौन छी ना ओनली नेचुरल नंबर रो इवन आसीबो ना हमको एटी प्रूव करे अछि. तो देखो क्वेश्चन आंसर प्रथम कोन बा जहा तुम स्टेटमेंट देछि से स्टेटमेंट कोन करबा सपोज नबा लेट नबा p of n. p of n नेक्स्ट कौन छी n square plus n is even natural number. देखो स्टेप 1. तो स्टेप 1 रो काम वाला ना स्टेप 1 रो काम वाला लेट नबा n equal 1. देन कोन आस देखलो ना पुट करो p of n रे पुट करो n जाय वैल्यू कौन पुट करला 1. तो नेक्स्ट कौन थी p of 1 ऐसा कहते 1 रो स्क्वायर प्लस 1. तो 1 रो स्क्वायर एला कहते 1 एला प्लस 1 1 प्लस 1 ऐसा कहते 2. देखो जो 2 आसला 2 रा हमर इवन नेचुरल नंबर ना ताजे व्हिच इज even natural number. कैसा कोन even natural number हैला. so p of 1 ऐसा कौन छी p of 1 is true. p of 1 ऐसा कहते हैं true आसा. नेक्स्ट देखिए अब कौन छी स्टेप 2. तो स्टेप 2 देखो assume that p of m is true. ऐसा कोन p of m is true. that is अब कौन सा थी p of m पको तो p of m n square plus m is even natural number. तो हम कौन कले ना ऑलरेडी हमने ले p of m पर कौन होची ना ट्रू होले. जदी ट्रू होची दैट मींस हम कौन होची लिख पे जाको एठी m square plus m इक्वल हम कौन लिखे इवन नेचुरल नंबर. तो इवन गोटे नंबर इवन है कौन सा 2 से तो मल्टीप्लाई पड़े तो 2 into लैम्डा हेले ना ई मन पर से ले जा धरनियो m square plus m इक्वल तार आंसर असला मन केते 2 लैम्डा. ए 2 लैम्डा कौन अछि इवन पर लैम्डा बिलोंग्स कौन आसीबो नेचुरल नंबर. देखो 2 लैम्डा मींस असला हम को लैम्डा कौन लेठी बिलोंग्स नेचुरल नंबर. तो लैम्डा का 1 पको तो 2 into 1 असला केते 2 असला. नेक्स्ट 2 into 2 4 2 into 3 6 2 into 4 8. देखो जहां मन कौन छटी ना ओनली इवन नंबर ही असला ना. त हम कोन करो इवन नेचुरल नंबर कहछि सेति हम कोन कली ना 2 से तो गोटे लैम्डा मल्टीप्लाई कली. तो मोर कोन पे ना मते दो करो ओनली इवन नेचुरल नंबर दो करो. तो सेति हम कोन गोटे नेचुरल नंबर सहित 2 गोटे मल्टीप्लाई कर रखी है ने. एबे m डबल ऐसे ले जो तो इंप्लाइज m स्क्वायर इक्वल है 2 लैम्डा माइनस m. जब 2 लैम्डा माइनस m होला आपण जीवा इक्वेशन नंबर 1. नाउ जीवा स्टेप 2. we have to show that p of m plus 1 is true for n equal to m plus 1. okay देखो that is एडी कौन आसो एठी एडी है देखो p of m plus 1 n जगह पे कौन पुट हेबो m plus 1. तासले लिखते m plus 1 रो होल स्क्वायर plus of n अछि. that means m plus 1 is even natural number. हमको एटा प्रूव करला अछि. देखो जदी प्रूव करबा
देखो नाउ ए कोन ना p of m plus 1 ने जाओ p of m plus 1 अछि कोन m plus 1 रो होल स्क्वायर प्लस ऑफ अछि केते ना m plus of 1 अछि तो m plus 1 रो होल स्क्वायर अछि केते m square plus 1 रो स्क्वायर प्लस असला केते असला 2 into m into 1 प्लस हेला केते m plus 1 हेला ए देखो एटा असला केते m square plus 1 plus 2m plus m plus 1 तो m square को m square रहला देखो 2m plus m हेला केते 3m 1 plus 1 2 ए देखो m square रो वैल्यू ऑलरेडी कोन छी बाहर राइ छी m square रो वैल्यू केते अछि 2 लैम्डा minus m वैल्यू पुट कर ठीक तो 2 लैम्डा minus m plus 3m plus 2 एटा पुट आनले बाय इक्वेशन 1 मो इक्वेशन 1 रो कोन करली ना m square रो वैल्यू पुट कर तो पुट कर देखा असला केते 2 लैम्डा minus m plus 3m तो असला केते ना plus 2m plus 2 देखो एठी 2 2 2 अछि तो 2 कॉमन जीव तो 2 कॉमन जीव लैम्डा plus m plus 1 हैला एबे देखो हम कोन करो इवन नेचुरल नंबर करो देखो टोटल ये लैम्डा भी नेचुरल नंबर प्लस m भी नेचुरल नंबर तो प्लस 1 नेचुरल नंबर सहित गोटे प्लस 1 कले कोन आसीबो मोर नेचुरल नंबर मोर 2 पर 5 अछि 5 से 1 कले 6 तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर आसीबो तो मोर कोन आसला तीनटा जब 1 भी नेचुरल नंबर तो जब तीनटा जब नेचुरल नंबर को एडिशन कले नेचुरल नंबर ही आसीबो तो सेतमे एडी कोन होची ना 2 into नेचुरल नंबर तम आंसर से कोन होची ना नेक्स्ट कोन होची इवन नेचुरल नंबर आसीबो तो ये कोन होची फिर लैम्डा प्लस m plus 1 belongs to natural number এটা কোন আছে ইভেন natural number হিসেবে না which is even natural number সেটা কোন even natural number হলো দেখো যদি even natural number হচ্ছে তো সো কোন আছে এটি so p of m plus 1 is true thus যদি p of m plus 1 true আছে তাহলে নেক্সট কোন আছে p of m is true implies next case study p of m plus 1 is true okay now the step 4 तो step 4 कौन study step 4 is hence by the PMI p of n is true for all n belongs to natural number okay ये है हमारा एग्जांपल नेक्स्ट दिबा अदर एग्जांपल गोटे देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5 करो सेगला प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन n into n plus 1 into 2n plus 1 is नेक्स्ट कौन करेगा डिविजिबल बाय 6 ओके हम क्वेश्चन ता देछि क्वेश्चन के बाद कौन सी प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स पीएमआई द्वारा प्रूव करेगा बट कंडीशन दला कौन सी n into n plus 1 2n plus 1 divisible by 6 for it कौन सी for all n belongs to natural number सेम मोर कौन सी n दा ऑलवेज मोर कौन सा नेचुरल नंबर जदी नेचुरल नंबर होची ना देखो सब्स्टिट्यूशन ले जाओ लेट जा क्वेश्चन दला ताको p of n देगा ठीक n into n plus 1 into 2n plus 1 is divisible by 6 ହେଲା ଯଦି divisible by 6 ହେଲା नेक्स्ट कौन थी स्टेप 1 देखो स्टेप 1 रे कौन थी हमु कहले नेचुरल नंबर कहछि नेचुरल नंबर लोएस्ट वैल्यू की अछि 1 तुम एटा वैल्यू पकेली लेट सब्स्टिट्यूशन लेट कौन अछि ना n इक्वल टू 1 कहले तो n इक्वल 1 पकेले देखो कौन अछि देन एरिया लगते p of 1
इसका कहते 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 ओके इसका कहते 1 into 1 plus 1 2 2 into 1 इसका कहते 2 plus 1 तो 1 into 2 2 2 plus 1 3 तो 2 into 3 6 तो 6 टा हमर कम होची 6 टा 6 द्वारा डिविजन होई परिबो 6 divided 6 इसका कहते 1 which is divisible by कोथा छला 6 है सो p of 1 को आसबो ट्रू इज बना p of 1 is true नेक्स्ट बा स्टेप 2 देखो स्टेप 2 रे से का आसलाटी assume that p of m is true p of m true आसो कोन फर्क केता ना m इक्वल बे कम अछि n बदले कोन पुट कले m पुट तो n बदले त हम पुट करिया मानक सेटअप टा कोन अछि ट्रू अछि जदि ट्रू अछि दैट मींस एडी की आसीबो दैट इज एबे जोठी n अछि देखो n जगह रे को आसीठी m पकेबो तो सेटा कहते हैं p of m is true नेक्स्ट का m into m plus 1 into असला कहते हैं ना 2m plus 1 is divisible by असला कहते हैं 6 तो याद करें डिविजिबल बाय 6 करें तो डिविजिबल बाय 6 को मैंने आका और लिख पेरिया को m into m plus 1 into 2m plus 1 equal to 6 lambda से नहीं जीवा ओके मोर ने डिसाइड कम वाली 6 lambda ने तो का को से डिविजिबल बाय 6 को जी तो 6 lambda डिविजिबल बाय 17 कहथिले 17 lambda डिविजिबल बाय 9 कहथिले 9 lambda डिविजिबल बाय 25 कहथिले 25 lambda जहां द्वारा डिविजिबल करथिबो से अनुसार 6 into lambda नेलो से 25 into lambda नबो फिर lambda कोन ना lambda has lambda थी फिर lambda belongs to natural number काहे कि हम नेचुरल नंबर द्वारा इंडक्शन प्रूव करिया अछि तो देखो नाउ जो स्टेप 3 we have to show that p of m plus 1 is true for n equal to m plus 1 that is n बदला में कम पकेबा कि m plus 1 तो p of m plus 1 है ना तो इसका कहते m plus 1 नेक्स्ट कहते हैं कि m plus 1 plus 1 नेक्स्ट कहते हैं 2 into m plus 1 plus 1 is divisible by असला कहते हैं 6 हमहु केटा प्रूव करिया छी डिविजिबल बाय कोथरा बा 6 द्वारा डिविजिबल प्रूव करिया छी दैट मींस देखो इको आसीडी ना आको लिख परबा ना p of m plus 1 दा प्रूव करबा देज कोन m plus 1 तो m plus 1 plus 1 सेकंड की अछि 2 into m plus 1 plus 1 2 into m plus 1 plus 1 है ना ये देखो वीडियो से कहते m plus 1 m plus 1 plus 1 m plus 2 next 2 into m 2m असला plus 2 into 1 2 plus 1 ये देखो ए टर्म टा भी सजै लिखिबी तब हम कोन एडजस्ट करछि p plus 1 m plus 2 आकोटी एडजस्ट करी कोन होछि ना 2m plus 1 को गोटे टर्म गली plus 2 टा को अलग हम तो सर आपन काहे ये दिन गले ना रीजन है ना मते आने अछि m into m plus 1 2m plus 1 टा मोटी यूज करी हल देखो एटी m plus 1 टा मोड अछि m आउ 2m plus 1 टा नाही तो म कोन गली जदि 2m plus 1 अछि ताकू गोटे टर्म कर देबी तापर यदि मल्टीप्लाई करले मोर दुटा टर्म वाली पळे आसीबो सेथे हम कोन गली ए टोटल टर्म भीतर मल्टीप्लाई करो तो m plus 1 m plus 2 into क्या आसीबो एटी ब्रैकेट देखो 2m plus 1 कोन माने कि अछि प्लस 2 into आसे के मल्टीप्लाई हो m plus 1 into m plus 2 ओके एबे देखो तो m plus 1 m plus 2 अछि कोन छी m plus 2 अछि ए m plus 2 टा को सदा म कोन अछि m plus 1 और m कोन अछि 2m plus 1 को मल्टीप्लाई करियो आके बेटी सदा लिखिबा m plus 1 m 2m plus 1 से मल्टीप्लाई कास करबा m plus 2 से तो मल्टीप्लाई करियो जेमिति 2m plus 1 plus 2 से मल्टीप्लाई करे नेक्स्ट कोन अछि प्लस 2 into m plus 1 m plus 2
एबे देखो ए दुटा को मु कोन करी ए दुटा को आज मल्टीप्लाई करी तो इनटू m हबो तो m + 1 इनटू 2m + 1 इनटू m ओके नेक्स्ट तापर आज प्लस अछि m इनटू अछि तो 2 इनटू m + 1 इनटू 2m + 1 2m + 1 प्लस एडी के अछि 2 इनटू m + 1 इनटू m + 2 एबे देखो लास्ट टू टर्म रे एठी m कोन 2m + 1 2m + 1 अछि तो कॉमन नै जाओ तो रेडी करते m + 1 इनटू 2m + 1 इनटू m अछि प्लस 2 इनटू m + 1 कॉमन गले तो रेस्ट रहला कि देखो 2 इनटू m + 1 बोलला पला तो रे 2m + 1 2m + 1 रहला नेक्स्ट करा अछि 2 इनटू m + 1 रहला देखि m + 2 देखो एबे कास लेडी m इनटू m + 1 इनटू 2m + 1 एडी वैल्यू कोन छै 6 लागडा आपन नै जमाना रे इक्वेशन 1 नै जा ओके तो मोर इक्वेशन 1 रे कोन आसला m इनटू m + 1 इनटू m + 1 वैल्यू केते अछि 6 लैम्बडा और वैल्यू इला केते 6 लैम्बडा प्लस 2 इनटू m + 1 इनटू द केते आसला 2m + m 3m 1 + 2 3 तो एटा कोड आसला बाय इक्वेशन 1 तो 6 लैम्बडा कोड आसला इक्वेशन 1 को बाहर करे ए देखो 6 लैम्बडा प्लस 2 इनटू द केते कोन 3 3 अछि 3 कॉमन ले जाओ तो 2 इनटू m + 1 3 कॉमन ले m + 1 है तो 2 इनटू द केते आसला 6 लैम्बडा प्लस 2 इनटू 3 6 इनटू m + 1 इनटू m + 1 तो m + 1 रो होल स्क्वायर देखो एटी कोन अछि 6 कॉमन ले जाओ तो 6 कॉमन ले एठी लैम्बडा प्लस m + 1 रो होल स्क्वायर एबे देखो लैम्बडा प्लस m + 1 रो होल स्क्वायर हैला तो लैम्बडा प्लस m + 1 रो होल स्क्वायर हैले मते बंद करो 6 से तो डिविजिबल होछि नै ए टोटल टर्मडा 6 द्वारा डिविजिबल होछि कि नै हम चेक करे अछि देखो जदी 6 टी मोर कॉमन जाई गला दैट मींस ये कोन अछि ऑलरेडी 6 द्वारा से डिविजिबल होछि है नि देखो और तुम को सारे डिवाइड होछि हम जानिए कि तो लैम्बडा प्लस m + 1 रो होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 करो तो 6 6 कैंसिल हो गेला डिवाइड हैला ता बाद एक्स्ट्रा के होछि रहू हम कोन करा 6 द्वारा डिविजिबल होछि कि नै चेक करे अछि तो डिविजिबल हैला तो देखियो कोन अछि व्हिच इज divisible by 6 हैला जदी divisible by 6 होछि नेक्स्ट कोन स्टडी therefore p of m + 1 is true हैला now देखो thus p of m is true implies p of m + 1 is true है लास्ट स्टेप कोन आसो स्टेप 4 hence by the PMI P of n is true P of n का आसला true आसला है ना एबे ये हमरा कोन नेक्स्ट बा अदर क्वेश्चन Next example 6 shall prove by principle of mathematical induction that ए काम करबा 41 रो पावर n minus 14 रो पावर n is multiple of 27 for all n belongs to 7 मैं काम कली ना 41 रो पावर कोन n अछि minus 14 रो पावर n रहला is multiple of कोन कली 27 आ प्रीवियस टाइम कोन करथिले डिविजिबल करथिले तो डिविजिबल जिमिति करले एक्जेक्टली सेम वे रे कोन आसीबो ना मल्टीपल ऑफ 27 सेम हो किछ डिफरेंस नै मल्टीपल देथिबा जहा डिविजिबल देथिबा सेम तो दी जन प्रोसेस कोन आसीबो इक्वल तो प्रथम स्टेटमेंट लिखो तुमको ऑलरेडी जहा गिवन देछि लेट नै जीवो p of n ऐसा कहते 41 रो पावर n minus 14 रो पावर n
is multiple of 27 है ना जब multiple of 27 आसला ना जो कौन सी थी step 1 देख step 1 रे कौन अछि ना let n equal to 1 we substitution करो n equal to 1 substitution करले कौन देखा पुट करले कौन आसला थी ना p of 1 ऐसा करते हैं 41 ର power 1 minus 14 ର power 1 ओके नेक्स्ट कौन थी 41 minus 14 सब्ट्रैक्शन करो ए कौन सी 10 10 minus 4 असला असला करते 10 minus सॉरी 11 11 minus 4 असला करते असला ये हमरो 7 नेक्स्ट कौन सी 3 3 minus 1 2 ये हमरो 27 हम कौन कहै छी मल्टीपल ऑफ 27 एंड 27 से किछ नंबर मल्टीप्लाई दे मल्टीपल में 27 into 1 है पारे 27 into 2 है 8 है पारे 27 into 5 27 into 6 किछ भी मल्टीप्लिकेशन है गिरी रथ है पारे तो 27 रे हम कोन लिख पारे 27 into 1 लिख परिबा ना लिख परिबानी तो मल्टीपल ऑफ 27 आसला which is multiple of 27 so p of 1 is true next दिबा step 2 देखो step 2 रे कोन अछि तासले लिखे दसला assume that p of m is true for n equal to हम कोन कहले assume करले कोन होछि सपोज धर लेले हमर कोन होछि 41 रो पावर n minus 14 रो पावर n ला बदल म कोन कहली n equal to इनपुट करली पुट करे सेटा हमर कोन होछि p of m रो वैल्यू जहां आंसर आसला से मल्टीपल ऑफ 27 ऑलरेडी आंसर आछि जदी आछि ताके हम कोन लिख परिबा दैट मींस कोन आछोटी n जरा इनपुट करो p of m 41 रो पावर m minus 14 रो पावर m is multiple of 27 जदि मल्टीपल ऑफ 27 आसला दैट मींस आप कोन लिख परिबो रे 41 रो पावर m minus 14 रो पावर m equal to 27 lambda से lambda डी कोन lambda belongs to natural number काहे कि हम नेचुरल नंबर कंडीशन रे देखि तो देखो जदि मोर 27 lambda आसला माने 41 माइनस कोन छी 41 रो पावर m minus 14 रो पावर m को जदि सब्ट्रैक्शन करला को जहां आंसर आसीबो से 27 इनटू किछ भी नंबर हे पारे तो किछ भी आस पारे हम जानिला त एक्जेक्टली कोन आसीबो मन को आसीला सेटा लैम्डा ने लैम्डा कोन नेचुरल नंबर ए 14 नंबर आसे ने जो 41 रो पावर m इक्वल आसला 27 लैम्डा माइनस 14 रो पावर m हैला आकुने जिबा इक्वेशन नंबर 1 नेक्स्ट जिबा स्टेप 3 we have to show that p of m plus 1 is true for n equal to m plus 1 that is p of m plus 1 तासला कहते हैं 41 रो पावर m plus 1 minus 14 रो पावर m plus 1 is multiple of 27 हम चेक करें जेटा मल्टीपल ऑफ 27 आछे कि नहीं देखो now p of m plus 1 कस लगाते 41 रो पावर m plus 1 minus 14 रो पावर m plus 1 अछि देखो एडिया से लगा लिख परटी 41 रो पावर m into 41 रो पावर 1 है minus 14 रो पावर m into 14 रो पावर 1 ना देखो 41 रो पावर m अछि तो 41 रो पावर m रो वैल्यू केता अछि 27 लैम्डा minus 14 रो पावर m into 41 रो पावर 1 असले कहते हैं 41 minus 14 रो पावर m into 40 ए देखो ए 41 डबल लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर सब जरे
तो 27 lambda into 41 minus 14 to the power m into 41 minus 14 to the power m into 14। देखो 14 to the power m 14 to the power m अच्छी तो कॉमन नहीं जाओ तो कॉमन है ना इसका कि 27 lambda into 41 minus 14 to the power m कॉमन है ले 14 इसका अच्छी minus 41 plus 14 इसलिए कितना चला सॉरी एठी माइनस था प्लस हो माइनस 14 अच्छी तो प्लस है प्लस 14 तो माइनस कॉमन है लेने इसका ठीक प्लस कॉमन है 14 माइनस 14 41 माइनस 14 है देखो तासला लिख तासला टी 27 lambda into 41 plus 14 to power n 41 minus 14 ऐसा करते हैं 27 है नहीं तो देखो 27 अच्छी तो 27 कॉमन ले जाओ टेकिंग कॉमन ले 27 कॉमन वाला तो 41 lambda plus 14 to power m असला देखो हमको मल्टीप्लाई 27 तो 27 into any number ये भी नेचुरल नंबर लैम्बडा नेचुरल नंबर अछि 14 to power m ये भी नेचुरल नंबर आसो तो 41 lambda plus 14 to power m belongs to natural number तो हमको कौन अछि मल्टीप्लाई 27 which is multiple of 27 जब मल्टीप्लाई 27 आसला तो माने क्वेश्चन नंबर कौन आसला p of m plus 1 दा so p of m plus 1 is true 10 ट्रांसलेट p of m is true implies p of m plus 1 is true step 4 hence by the PMI p of n is true for all n belongs to natural number okay देखो तो कौन सा थी ना हम प्रूव करथिला मल्टीपल ऑफ 27 आसला तो मल्टीपल p of m plus 1 भी ट्रू हैला दैट मींस ऑटोमेटिकली कौन आसीबो p of n also true now the next question देखो सेम वाला प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एक्शन दैट नेक्स्ट कौन अछि 4 to the power n plus 15n minus 1 minus 1 is divisible by 9 for all n belongs to natural number for all n belongs to natural number that means देखो एठी कौन कहछि एठी कहला जदि 4 to the power n अछि plus 15n minus 1 रहला ए क्वेश्चन रे n रा जदि नेचुरल नंबर होछि n रा वैल्यू हम जे कोनस नंबर पुट करिवा तार जहा आंसर आसीबो से कोन आसीबो डिविजिबल कोथरा होछि 9 द्वारा डिविजिबल होथिबो देखो जदि 9 द्वारा डिविजिबल होथिबो हम एठी चेक करिवा नेक्स्ट सॉल्यूशन लेट ना क्वेश्चन रे जाओ p of n equal जहा क्वेश्चन रे 4 to the power n plus 15n minus 1 is divisible by 9 जब divisible by 9 असला ए कौन छी स्टेप 1 by step 1 let n equal 1 then देखो n equal 1 पकाओ असले कहते p of 1 okay now put 4 to the power 1 plus 15 into 1 minus 1 minus 1 so sum is 4 plus 15 minus 1
तो 4 + 15 आसला के दसला ना 19। नेक्स्ट कौन सी -1 जगह दसला 18, तो 18 इज डिविजिबल बाय 9। 18 डिवाइड बाय 9, 9 on the 9 टू जा ठीक है सर डिविजिबल होची। नेक्स्ट कौन सी which is divisible by 9, so p of 1 is true। next one, now going to step 2 assume that p of m is true for n equal to m। assume कले कौन सी n बदल रे m पुट करे इरा ट्रू अछि बेला दैट इज n बदल काम पकेबा m पकेबा तो p of m नेसेटी अछि 4 to the power m plus 15m minus 1 is divisible by 9। तो इसे तक कौन सी divisible 9 बेला जति divisible 9 अछि दैट इज आप कोन लिख परिबा एटी implies 4 to the power m plus 15m minus 1 equal to 9 lambda। से नहीं जाओ नेक्स्ट कौन सी lambda belongs to associated कहते नेचुरल नंबर। lambda belongs to नेचुरल नंबर तो divisible 9 कहछि माने 9 lambda पकेली एबे 4 to the power m छाडी कि बाकी सब राइट नहीं जाओ असला के 10 ला 4 to the power m equals to 9 lambda minus 15m minus 1 -1 ना कोन आइछ बेटी +1 हैला। एबे देखो ताकू ने जे कोन छी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जीवा स्टेप 3। देखो स्टेप 3 कहां आसीबो वी हैव टू show that p of m plus 1 is true for n equal to m plus 1। ए देखो नेक्स्ट कौन छी दैट इज कौन लिख पे ना कोठी हम कौन प्रूव करे छी दैट इज p of m plus 1 इक्वल टू कितना इज बेटी n जार m plus 1 को p of m plus 1 इक्वल से 4 to the power m plus 1 plus 15 into m plus 1 minus 1 is divisible by 9। हम का कहला divisible by 9 कहछि दैट divisible by 9 कहले एठी आसे केते आसला हम प्रूव करिया नाउ p of m plus 1 ताले के एठी 4 to the power m plus 1 plus 15 into m plus 1 minus 1। देखो एबे कोन अछि हम कोन दकर एठी 4 to the power m दकर तो मते कोन दकर 4 रो पावर m तो जोटी 4 to the power m plus 1 अछि अब कन्वर्ट करबा ना होबे 4 to the power m into 4 रो पावर 1 15 रे मल्टीप्लाई करो 15m plus 15 minus 1 15 रो भीतर मल्टीप्लाई करली नेक्स्ट कोन अछि 4 to the power m वैल्यू पुट करो 9 lambda minus 15m plus 1 अछि into 4 रो पावर 1 4 plus 15m plus 15 minus 1 14 9 lambda in plus लगते हैं 4 minus कौन सी डी ये ऐसे हम देखो minus 15 m अच्छी ना minus 15 m minus 60 m ऐसे next ऐसे कहते हैं plus 4 plus 15 m plus of 14 ये देखो तो 9 lambda into 4 minus 60 plus 15 अछि तो से 10 to 5 वाला सकते हैं 5 वाला 4 minus 45m plus 4 into 4 वाला plus 4 plus 14 तो सकते plus 18 तो 89 कॉमन जीवो तो 4 lambda minus 5m plus 2 देखो हम कौन कहै छी डिविजिबल बाय 9 टोटल टर्म नंबर का 9 कॉमन जाय छी दैट मींस का डिविजिबल बाय 9 हैला तो एठी बाकी सब रहला की आछो ना 4 lambda minus 5m plus 2 कोन आइजो ये हे जेबो नेचुरल नंबर काहे कि नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर तो ऑटोमेटिकली
नेचुरल नंबर ही आसीबो तो व्हिच इज डिविजिबल बाय 9 आसला तो डिविजिबल बाय 9 आसी नेक्स्ट कोन सो p of m plus 1 is true नेक्स्ट कोन सी thus p of m is true implies p of m plus 1 is true. Now let's go step 4. Hence by the PMI p of n is true for all n belongs to natural number. Okay, तो p of n का आंसर ट्रू है. तो आज में ये नेक्स्ट क्लास रे अदर प्रोग्राम करिवा. ओके.